Hello, Namaskar, and welcome. This is Intraday Insights with Kotak Securities. So this is a new initiative that we've started wherein हम data के basis पर और multiple market parameters के basis पर आपको intraday updates देंगे market में, specifically focusing on Nifty 50. We'll be covering three parts in this, जहाँ पे overall market update कैसा चल रहा है, option chain analysis, advanced option chain analysis, in fact, and the last part will be walkthrough to the charts. So I think our experience suggests consolidative view of the markets really helps, and having some more information and research-based inputs always helps in taking better trading decisions. So आइए शुरुआत करते हैं intraday insights with Sahaj Agrawal at Kotak Securities. So to start off with, let's just take a look at what the data is suggesting. These are the relevant disclaimers. Yes. Now, looking at the overall intraday performance, जैसे आप देख रहे हैं, today Nifty, the broader market is doing much better than the than the frontline indices. Small cap is positive. Nifty 50, Nifty next is also trading positive, whereas Nifty is trading rather flat to marginal negative. And sector में कहाँ पे performance देख रहा है? High beta sectors. So reality is at its top and its best performance. ये सेक्टर ने काफी अंडर परफॉर्म किया था पिछले कुछ टाइम में, एंड दिस इज नाउ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द मार्केट. Secondly, you have the pharma and healthcare space and auto. So I think if you were to look at the high beta sectors कौन से perform कर रहे हैं, then reality and auto are extremely interesting. Whereas today IT seems to be more on the underperforming side for the markets. Now comes the advanced intraday option chain analysis, जिसमें हम multiple parameters आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो राइट फ्रॉम द लार्जर टाइम फ्रेम टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम हम देखते हैं. तो सबसे पहली बात, ऑन अ वीकली बेसिस अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड में 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, जबकि पुट साइड में 16 लाख एंड 41,000. सो बेसिकली व्हाट दिस इज सजेस्टिंग दैट कॉल राइटिंग की एक्टिविटी ओवरऑल ऑन अ वीकली बेसिस थोड़ी ज्यादा है. नाउ इवन इफ यू वर टू सी ऑन एन इंट्राडे बेसिस, देन 6,30,000 टोटल कॉल ऑप्शन ऐड हुए हैं, जबकि पुट साइड पे इट्स 3 lakh and 64,000. So on a larger time frame as well as on the shorter time frame आप देख रहे हैं कि call side की activity थोड़ी ज्यादा बनी हुई है, right? Now coming to the next part of what is critical, the maximum open interest build up is focused on the 25,000 call and the 25,000 put. इसका मतलब ये है कि traders are anticipating that the overall movement is expected to remain broadly within a narrow range. नैरो रेंज की ट्रेड की उम्मीद है आज के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये पोजीशंस कहीं कैरी फॉरवर्ड भी होती हैं, तो नियर टर्म में भी एक्सपेक्टेड है कि आपका ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट ही रहेगा. ऑप्शंस की प्राइसिंग के बेसिस पर हम जो क्रिटिकल लेवल्स निकालते हैं मार्केट के, जो एक वीकली सीरीज का जो ऑप्शंस का बिल्डअप है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपका इंप्लाइड रेजिस्टेंस आ रहा है 25,250 का, और आपका इंप्लाइड सपोर्ट आ रहा है अराउंड 24,800 का. तो ब्रॉड रेंज आपका ये नजर आ रहा है. बट लुकिंग एट दी मूवमेंट टुडे, जो प्रैक्टिकली फ्लैट मूवमेंट रहा है विद सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हैपनिंग, एंड again the focus broadly has been on the 25,000 strikes for the call and put, range bound activity रहने की ही उम्मीद है. अब इसमें हम मनी फ्लो का एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पे आप ये साइड में ये जो दो बार्स देखेंगे, शॉर्ट बिल्डअप ऑन द कॉल साइड एंड राइट साइड पे शॉर्ट बिल्डअप ऑन द पुट साइड. So main activity that is actually happening all throughout the day. यहाँ पे if you see it's being highlighted for your convenience. Short build up on call side, short build up on put side, right? So at this point of time, just before 5 minutes, we've updated this particular data set for you. Broad activity is suggesting extremely range bound movement. Now, unless we see a change in this behavior, हमको कोई चेंज दिखता है इस ट्रेंड में या पैटर्न में, देन पॉसिबली वी कैन एंटिसिपेट सम सस्टेन्ड मूवमेंट गोइंग हेड. अदरवाइज इट इज हाईली पॉसिबल दैट आप एक रेंज बाउंड एक्टिविटी और साइलेंट डे में समय आज का दिन पूरा निकाल सकते हैं. Lastly, we'll just walk through the charts because I think charts are extremely important for us to have a holistic view of the markets. So moving on with the charts, yes. Now this is the Nifty live chart. ये जो blue line आपको दिख रहा है, this is where today's day started.
एंड आई थिंक इसके पहले का जो आप देखेंगे उसमें भी रेंज बाउंड मूवमेंट ही है. सो इनफैक्ट ये जो लास्ट बड़ा कैंडल दिख रहा है, दिस हैपेंस टू बी द प्रीवियस एक्सपायरी डे जहां पे बड़ा मूवमेंट हुआ था. उसके बाद वी विटनेस्ड Friday, which was the previous trading session, and today being extremely range bound movements. And coupled with this, if you were to see the options chain, then 25,000 call and put have the maximum open interest, right? So broadly the movement for the market is pretty range bound. आज के दिन में हमने ना previous trading session के low को break किया है on sustainable basis, ना उसके high को हमने cross किया है. So extremely silent day, extremely low activity. In fact, if you were to even look at the RSI in today's session, we've not got overbought at any point of time, nor have we went oversold, right? So the entire space, the entire activity broadly is muted. क्या चेंज होगा तब हमको लगेगा कि भाई इसमें मूवमेंट और बढ़ सकता है. सो पॉइंट नंबर 1 इज, यदि हमको जो हमने ऑप्शंस चेन एडवांस्ड आपके साथ शेयर किया उसमें जो शॉर्ट बिल्डअप में कहीं ना कहीं हमें चेंज दिखे, तो दैट कुड बी वन ट्रिगर पॉइंट. अदरवाइज एज एन इंट्राडे बेसिस, pure short term, previous day's support is expected to be extremely strong. So previous day's support is placed around 24,950. आज के दिन में भी we went towards that level and again witnessed some kind of a bounce back, though the momentum is a little slow. But यदि आपको ये दोबारा लेवल मिलता है तो pure as an intraday trader we believe वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. Otherwise today seems to be a silent day with stock specific movement expected to happen as it is happening, जिसमें हमने देखा कि real estate and auto space seems to be in action, right? So this brings us to the end of a very brief data oriented, research oriented update for you. Intraday insights is something that we've designed. Hope this was helpful. The quick snippets basis on research is what we intend to share. Do share your feedback, do share your questions, and we'll try and cover them in the sessions going ahead. So that's about it from my side. Signing off. This is Sahaj Agrawal. Have a great trading day today. Thank you.